Okay, so here's the explanation of working of a three cavity calestron. So in order to understand the working efficiently, we have seen the diagram, but I'm reading it for you. So it is written as, at the left is the cathode, which emits a stream of electrons that is formed into a narrow cylindrical beam by the electron gun. So this is called electron gun, which includes filament, heater, cathode, right? So with the help of electron gun, the electrons are emitted. With the help of electron gun, the electrons are emitted and they follow a cylindrical path, or they form a cylindrical beam. Okay. After that, the electron gun consists of cathode, that is the source of electrons. So source of electron is cathode, but it is, you can say, indirect source of electrons. The direct source of electron is heater or filament, but in general we call cathode as a source of electron. In other words, we simply say that the electrons are produced from the cathode and they are moved from cathode to anode. But actually, the real source of electron is your filament. Okay, so the source of electron here they are mentioning it as cathode. उसके बाद modulating anode or other beam control electrode to provide a means for tuning the beam on the on and off to generate pulse and the anode. It means simply आपका एक कैथोड है, उसके बाद एनोड आता है, मॉड्यूलेटिंग एनोड बोल रहे हैं इसे। और मॉड्यूलेटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज को हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं, modify कर रहे हैं by keeping the cathode and anode potentials high and low, positive and negative, so the voltage will be on and off, you can say. ठीक है। उसके बाद there are multiple RF cavities, as I mentioned in the diagram there are three RF cavities and which correspond to the LC resonant circuits. I told you all these cavities behave as the LC circuit, so it is exactly the same which I have told you in their diagrammatic representation. ठीक है। सो जो डायग्राम में था एग्जैक्टली वही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे तीन RF कैविटीज होती हैं जो कि LC रेजोनेंट सर्किट्स की तरह बिहेव करती हैं, जो कि नॉर्मली कन्वेंशनल लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स में होती हैं, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू LC सर्किट्स ऑफ कन्वेंशनल लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। पढ़े होंगे ना आपने एम्पलीफायर्स, उसमें tuned amplifier पढ़े होंगे, डबल tuned amplifier, stagger tuned amplifier. So there are amplifiers which includes the LC circuits, तो कुछ उसी तरीके के LC circuits होते हैं। उसके बाद RF input signal is now, अब हम क्या कर रहे हैं, finally we are applying the RF input signal across the interaction gap of the first cavity. Now you can see, I'll show you in the diagram. See, this is the diagram. In this left hand side part, let me use the annotation. Okay, this part is your electron gun. Up to here, यहाँ तक का जो काम था ना, वो electron gun का था। यहाँ पे ये बनाया हुआ है, इन्होंने dotted line बनाया हुआ है। After this we have RF section. तो ये RF section के अंदर आपकी ये 3 RF cavities आती है, 1, 2, 3, 3 RF cavities, RF input, RF आउटपुट, और एक होती है यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पेस। यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पेस जो होता है वो बंचिंग प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। सो दिस इज द RF सेक्शन एंड द थर्ड एंड फाइनल सेक्शन इज द collector section. This section is the collector section at which the electron beam is collected. Okay. Hmm? Is this clear to everyone? So you can divide the entire diagram or the entire जो कि tube है, this you can divide in three sections. The first section is the electron gun, second section is the RF section, and the third section is the collector. Just like you can relate with the CRT, there you had an electron gun, then the deflection plates, and then द स्क्रीन। याद है अगर आप लोगों को, तो इसी तरह से यहाँ पे भी 3 सेक्शंस हैं। ओके। तो RF कैविटीज का फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। इट इज यूज्ड टू बिहेव एज LC सर्किट्स फॉर जनरेटिंग RF ऑसिलेशंस। और यहाँ से अब हम क्या करते हैं, RF इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन। ओके।
So up till now it is clear to everyone? Class, is this clear now?